Hi guys, welcome back to another video, and a very special video for me personally as a creator, or generally bhi. I think many of you might have seen my story in which I had posted this, so you already know what this is. This is the latest 2024 Mini GT Christmas edition model. So this is the Christmas hot rod, and the special thing about this model for me is that it is a gift for me from the CEO and founder of Mini GT, Mr. Glenn. So he has sent me this gift, and you might have seen my other videos also. उसमें मैं एक टैग लगा देता हूँ, जो भी वीडियो मैं पार्टनरशिप में बनाता हूँ ब्रांड के साथ, उसमें आई पुट द टैग सो दैट यू नो कि दिस इज अ पार्टनरशिप वीडियो. ऑल्दो जो भी बातें होती हैं मैं आपको काफी ट्रांसपेरेंटली बता देता हूँ, बट स्टिल आई पुट द टैग फॉर utmost transparency. If you want to buy the car from stores, I think it is available. 3000 के आसपास इसका प्राइस है. What I have received is this beautiful ribbon. So ribbon से ऐसे ही आपका शॉपिंग बैग, एक मिनिएचर बहुत ही क्यूट सा शॉपिंग बैग है. पीछे अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे लिखा हुआ है स्पेशली फॉर यू, विच इज वेरी स्पेशल. एंड सिमिलरली सामने भी आपको यहाँ पे स्पेशली फॉर यू लिखा हुआ है. इट्स अ ब्यूटीफुल क्यूट शॉपिंग बैग, एंड दिस होल्डिंग हैंडल इज वेरी क्यूट, वेरी प्रीमियम. एंड इनसाइड व्हाट इज स्पेशल इज अ लेटर. So this is a letter from the CEO himself. Now keeping these, we come on to the car itself. This is the car, okay, and it's got a big broad box. पहले भी Mini GT बनाते आया है Christmas models. In fact, I've got a few of them. That reminds me, I'll show it to you guys. I'll show you the Christmas models which I have. So one thing which I always do in all my videos is कि I show you guys what all related cars I have got in my collection, and this is one of those. This is the first, I think probably the first Christmas Bentley that Mini GT had made. And back then everyone was super excited about it. This was also limited, I think 9,999. Great details up front. From the side it was most beautiful. The golden chrome wheels, they were just amazing. And on the wing you had Merry Xmas written. Rear was also very beautiful. And you'll be surprised to see, you check the prices online, you'll be surprised to see how much this is appreciated. So this is one. Then we've got another Bentley. This was also like really beautiful. This is, I think, the 4-door Bentley. So this was one, and this had got some great front details, looked very nice. Great side details also. The golden wheels, matte gold this one had, not chrome but matte. And rear also it had some great details. Personally speaking, I just loved the paint finish on this. You see the hood, the way it shines, and the front details, both of them very nice. And it had a very unique number plate also. If you can see the number plate, you can see very nice and unique. Couple of Christmas Bentleys. Then this was also a Christmas model by Mini GT, and this was the R34 GTR. Great front details. On the side you had written Merry Christmas. On the hood also you had written Merry Christmas. Here it was written Let It Snow. Nissan logo on the spoiler wing. And rear details also very nice. And red wheels, they look great. So this was a JDM car which Mini GT made as its Christmas model. And then another related car I had in my collection. I think this is probably the first time Mini GT had made this casting. It was so nice to see Mini GT making this, because they used to make generally JDM cars or hypercars, supercars and stuff like that. So when they made this, it was very refreshing, and that's why I got it. Beautiful in black, very nice. Great front details. Side details also very nice, and of course some great rear details. If you look at the base, that also very nice and well detailed. So now Lincoln Capri Christmas Hot Rod यहाँ पे लिखा हुआ है. So right now over here you can see कि यहाँ पे आपको एक बड़ी स्पेशल चीज लिखी हुई है, Lincoln Capri Christmas Hot Rod by Tim Sadchikov. तो ये एक्चुअली एक डिजाइन हुआ था. मिनी जीटी हैड लॉन्च्ड अ कॉन्टेस्ट कि आप डिजाइन करो एंड द बेस्ट डिजाइन विल विन. सो दिस इज द डिजाइन दैट वन. यहाँ पे आप देखोगे नंबर भी इसका बहुत ज्यादा स्पेशल है. इफ यू लाइक नंबर्स, दिस इज नंबर 888 which is a very unique number. And then over here you've got written limited edition 1 out of 9999. So 1 out of 9999 means almost 10,000, one less than 10,000. So it's pretty limited. आजकल आप जानते हो RLC वगैरह भी जो होती हैं हॉट व्हील्स की, वो कितनी मतलब 15,000 20,000 ऐसे बनती हैं. कुछ तो नंबर वाली होती ही नहीं है. So for that matter this is very limited. अभी ऐसा सुनने में लगता होगा कि पूरी दुनिया में होंगे 10,000 pieces. But generally cars which are numbered like these, especially brands like Mini GT and all, they
have the tendency to go up in value over the next few years. पूरा winter themed आपको ये मिलता है बॉक्स. यहाँ पे you snowflakes kind of a symbol एंड 24 यहाँ पे बना हुआ है. पीछे अगर आप देखोगे यहाँ पे फोर्ड की आपको लाइसेंसिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है, मिनी जीटी के हैंडल्स मिलते हैं एंड यहाँ पे लिखा है एजेस 14+. दिस इज अ कलेक्टर्स आइटम, नॉट अ टॉय. कार्ड आर्ट इन इटसेल्फ इज वेरी ब्यूटीफुल. I'll probably post a short video of the unboxing. अभी ऐसा आपको खोल के दिखाता हूँ. This is how you open it and inside you get this big blister. So you get a big blister like this, which you probably get to see in Kaidos and all. और इसमें मजेदार चीज आप ये देखोगे कि साइड बाय साइड आपको दो चीजें नजर आएंगी, राइट? सो हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट. व्हाट मिनी जीटी हैज डन दिस टाइम, मैं इसको ऐसे खोल के दिखाता हूँ. यू सी दिस वन, द वन विच हैज गॉट अ टैग. सो दिस इज एक्चुअली क्रिसमस ऑर्नामेंट. आई जस्ट पुट इट लाइक दिस. दिस इज अ क्रिसमस ऑर्नामेंट. तो ये पेड़ पे टांगने के लिए दी गई है. पीपल हैंग ऑर्नामेंट्स ऑन द ट्री एंड ऑल. सो दिस इज दैट. एंड देन दिस इज द एक्चुअल कार. सो यू सी दिस वन, it's a little blue chrome, beautiful in blue. It's got a very nice spectra flame paint. And the other one, this is rainbow chrome, which is like even cooler. If you see this part, you'll probably be able to see it's got a very nice and unique rainbow chrome kind of a finish. अब मजेदार बात क्या है? For some reason, I don't know why my stupid mind was wondering कि if this is an ornament, this might not be a real car. This might be you can say somehow a replica of a car which is just meant for hanging. But Mini GT has gone all out. This is a real car. And if I consider that, then suddenly आप realize करोगे कि you're getting 2 cars for that price. So that makes it pretty insane and also gives it very good value for money. Front से if I have to show you, you will probably see the headlamps, they are very nice. दोनों साइड बाय साइड आपको दिखाता हूँ so that you can see the differences. Both of them have got great headlamps, great details. इसको थोड़ा ऐसे सामने से दिखा देता हूँ. So you can see the headlamp, that looks very nice. Hood आप दोनों का देखोगे, this does not have mirrors, so I can place it like this. So hood, if I have to show you, hood is very nice. This one has got the more rainbow chrome in it. This one has got the blue chrome in it. Wheels साइड से आप देखोगे दोनों के काफ़ी सिमिलर हैं. एंड ऑल्सो इसकी जो रूफ है, रूफ में ये आपका चूंकि रिबन निकला हुआ है तो ये थोड़ा डिफरेंट लगता है. इसकी रूफ में आपका रिबन नहीं निकला है तो आप देखोगे कि इसमें 24 आपको साफ साफ नजर आएगा लिखा हुआ है. इट्स रिटन 24. इट सिग्निफाइज 2024 की क्रिसमस कार है ये. साइड से व्हील्स आर वेरी नाइस. यहाँ पे इधर क्रिसमस लिखा हुआ है और व्हील्स भी अच्छे ही हैं. यहाँ पे मिसेस क्लॉज लिखा हुआ है एंड देयर वाज सम वेरी कूल डिकैल्स ऑन द कार in the form of snow. And then when we come on to the rear is also very beautiful. Probably a better angle to show you is this. दोनों के ही बूट में ऐसा इट्स सिग्निफाइंग कि द कार्स ट्रंक इज फुल ऑफ प्रेजेंट्स और इसीलिए दोनों के बूट पे आपको ढेर सारे प्रेजेंट्स बने हुए हैं. मल्टी कलर्ड, वेरी कलरफुल, सो इट लुक्स वेरी नाइस. एंड ऑफ कोर्स द डिटेलिंग ऑफ द टेल लैम्प्स एंड ऑल इज प्रीटी गुड. मजेदार चीज जैसे इसमें मैं आपको थोड़ा ऐसे करके दिखाऊंगा. ऑर्नामेंट है. ऑर्नामेंट अगर आप इधर साइड से विंडो के थ्रू देखोगे तो यू विल रियलाइज कि प्रॉपर एक कार लेके उसके छत में एक छोटा सा होल करके, ड्रिल करके उन्होंने ये डाल दिया है. सो you are technically getting 2 proper cars and this one is also very heavy. I've kept my scale also with me, so I'll show it to you in a bit. बाकी बेस की एक और डिफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ. द क्रिसमस स्पेशल ऑर्नामेंट, इट यूजेस दिस कायदो हाउस काइंड ऑफ अ बेस. And the normal one, it uses a normal, this is also chrome, very nicely finished, but this is a normal base and this one is proper Kaido house style rainbow finish. Both of them have got very good detailing on the base also. And also front में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो bumpers हैं वो chrome के हैं. Rear में भी जो आपके bumpers हैं वो chrome के हैं. So that is very nice. Now I'll just quickly bring out my scale and we'll quickly weigh and check the weight of these models. Let's go. So for fun, we'll start off with this, the R34 GTR, which is probably the lightest. 41.9 grams, almost 42. So the thing about mini GTs is that these are so heavy because they've got a metal base. All of them have a metal base. So even the lightest ones are very heavy compared to other cars by other manufacturers. Then we'll take this, or probably we'll take this, the 2-door Bentley. So we'll see what is the weight of this one. Little more than the GTR. This is close to 50.7. Very nice. Then we've got this. This is the 4-door Bentley.
definitely heavier than that. This is 58.4. And I'll be honest with you, this feels very heavy to me. So this is the black one, the first release. So I'll check this. 65. So you can see heaviest of the lot. And then I'll quickly show you the Christmas model, which is the same car in a different paint scheme and all of it. So this one is 62.3. Okay, probably a couple of grams lighter than the black one. And then here we've got this. This is the ornament with this extra ribbon and stuff. Let's check its weight. 63 grams. So proper, probably 0.2 grams extra for the weight. And now to close it off, what we'll do is we'll keep it in the box. The whole box, let's see, 153 grams. Wow, that's a lot. And I got it alongside this. So if I have to check the weight of mine, close to 180 grams. सो गाइज दिस इज इट शॉर्ट वीडियो. पर्सनली बोलूँ तो मेरे दिमाग में भी ये सवाल जरूर था कि क्या ये वर्थ है या नहीं, बट मेरे दिमाग में ये मिसकंसेप्शन था फॉर सम रीजन कि शायद वो जो ऑर्नामेंट है वो एक रियल कार ना हो, वो सिर्फ एक आउटर बॉडी शेल काइंड ऑफ अ थिंग हो कि उसको बस ऐसे कहीं टांगने के लिए, इट्स मोर लाइक अ डेकोरेटिव आइटम, बट इट्स अ रियल कार इन विच दे हैव एडेड दैट रिबन और उसका यूनिक पेंट है, सब कुछ है. इट्स अ वंडरफुल पीस टू डिस्प्ले एंड आई थिंक नाइस पैकेजिंग. आई शोड यू बोथ ऑफ देम आर वेरी हेवी. आई शोड यू द वेट ऑल्सो कि वो बिल्कुल रियल कार है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है. इनफैक्ट उसका 0.2 ग्राम्स वेट ज्यादा ही है, कम नहीं. पेंट यूनिक है, सब कुछ है. सो in case you find this and you've got the budget, I would suggest you go for it. ये देखो, जैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया, ये मैंने बहुत पहले ली थी, तो आप जाके चेक करो eBay वगैरह पे क्रिसमस बेंटले उस जमाने की. you'll see कि अच्छा खासा इसका एक हुआ है इंक्रीज वैल्यू में. So at the end of the day, it's a collectible item and it's very rare, it's very unique, it's very innovative to be honest. प्लस ये जो डिज़ाइन कंटेस्ट है, पहली बार मिनी जीटी ने करवाया था कि डिज़ाइन कंटेस्ट हुआ, जिसने जीता वो कंटेस्ट उसकी गाड़ी बनी. आई थिंक इट्स प्रीटी कूल. लेट मी नो व्हाट डू यू गाइज थिंक अबाउट इट. एंड सडनली व्हेन यू थिंक अबाउट इट एज ओके 3K बट नॉट फॉर 1 but 2 कार्स, क्या अब आपको ये पहले से ज्यादा VFM लग रही है? मुझे तो लग रही है. मैं आपको बताऊं, मुझे लग रहा था एक रियल कार मिलेगी, एक उसके साथ कुछ बस ऐसा ऑर्नामेंट सा मिलेगा, विच विल नॉट बी अ रियल कार. बट नाउ दैट इट्स अ रियल वन, my views have changed. Let me know what did you think. Thank you.